माफ़ कर देना मेरी इस फर्स्ट बोलने वाली मेकअप वीडियो के लिए। नेक में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और अपने ईयर्स में भी। तो गाइस कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 02 सनसेबल। सो मैं इसको अपनी अंडर आइज़ पे लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें इसको नेचुरल दिखाना है, पार्टी मेकअप लुक नहीं करना है। और ये कंसीलर भी आपको तभी यूज़ करना है इफ़ यू हैव डार्क सर्कल और यहाँ पे कुछ पिगमेंटेशन हो, सो तभी आप कंसीलर यूज़ करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। गाइस ये इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है ना कंसीलर, चाहे आप कितना भी महंगा कंसीलर ले लो ना, बट अगर आपने इसको एक बार यूज़ कर लिया ना तो गाइस आप महंगे You give
की हेल्प से पिक करो। सो हमेशा डस्ट ऑफ कर दो। मैं इसको अपने हाथ के ऊपर ऐसे हल्का सा कर देती हूँ एंड देन उसके बाद इसको मैं अप्लाई करती हूँ। shadow in the shade 02 smart eyeshadow. सो मैं इसको अपने चीक बोन पे अप्लाई करूंगी अच्छे से, थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा लिप्स पे और चिन पे। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं यूज़ करूंगी वादी हर्बल का लिप बाम। इस मेकअप फिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूंगी स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक मिनी लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रस्ट लस्ट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।